Hello students and welcome to the channel SNW Physics classes. If you really understand the concepts taught here, please turn the black thumb blue. That means like the video, share with your friends and subscribe to the channel SNW Physics classes. Also do not forget to hit the bell icon for the latest updates. This is the fourth part of the first chapter, class 9th physics, that is motion. For the previous videos, click on the I button or you can go through the links given in the description box. In this video, we are going to discuss the topic equation of uniformly accelerated motion with derivation. We have two types of derivation here, graphical representation as well as mathematical derivation. So we will also discuss some graphical representation of motion and uniform circular motion. Equation of uniformly accelerated motion. There are three equations of motion for those body which travels in uniform acceleration. So the first equation is v equal to u plus at. Second is s equal to u plus 1 by 2 at square. And third one is v square is equal to u square plus 2as. So here we have mathematical derivation of equations of uniformly accelerated motion. So let's begin with, here we know that first equation of motion is v equal to u plus at. It gives the velocity acquired by the body. Let us consider a body, let us consider a car, but here we can consider any object, a body having initial velocity u and it is subjected to uniform acceleration a, and finally its velocity becomes v. Okay, after time t, the time taken to change its velocity is t. Okay, now according to the definition of acceleration, we can write acceleration equal to change in velocity by time taken for that change. Okay, or we can write final velocity minus initial velocity divided by time taken for that change. So we get the expression a equal to v minus u by t. So at equal to v minus u, and thus we get the equation of motion, that is v equal to u plus at. The above expression is known as first equation of motion. This expression is known as first equation of motion. Now we will derive second equation of motion, that is s equal to ut plus half at square. It gives the distance traveled by a body in time t. इससे हमें क्या find out कर सकते हैं हम यहाँ पे, distance traveled by the body in any time t. So let us suppose a body whose initial velocity is u and it is uniformly accelerated with a acceleration, and to reach the velocity, final velocity v, it takes time t. ये टाइम कितना इसने लिया, इस बॉडी ने t टाइम लिया और उसकी वेलोसिटी जो है u से चेंज होकर के v हो गई. Now let us consider the distance traveled by this body is s. यहाँ पे हम लोगों ने क्या ऐड किया, distance traveled, because with the help of second equation of motion we find out the distance. सेकेंड इक्वेशन की मदद से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी. नाउ हियर वी सी the average velocity of that body. To find out the distance between distance traveled by the body, we consider that average velocity is initial plus final velocity. Do you remember the definition of average velocity? The arithmetic mean of initial velocity and final velocity is known as average velocity. So we can write here for initial velocity u and final velocity v. So average velocity is equal to u plus v by 2. The distance traveled by body is average velocity into time. V is equal to distance by time. So we can write distance is equal to velocity into time, average velocity into time. Now we put the value of average velocity here, u plus v by 2 into time. Let it be the equation 1. Let it be the equation 1. From the first equation of motion, now we consider the first equation of motion. We consider the first equation of motion, and
we put the value of v here in equation 1. So here we see s equal to u plus at. ओके, यहाँ पे जो v की वैल्यू थी, वहां पे v की वैल्यू क्या थी, v इक्वल टू u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at. अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे v के जगह पे v की वैल्यू को हम लोगों ने पुट किया, जैसे पहले, इससे पहले वाले इक्वेशन जो हम लोगों को मिला था, s इक्वल टू u प्लस v बाय 2 इंटू t. इससे पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा, ये था मेरा इक्वेशन. अब इस v की जगह पे इस v की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने u प्लस at रखा, यहाँ पे है u प्लस at. ओके, नाउ वी गेट u प्लस u, वी गेट 2u. यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला, 2u प्लस at into time. Okay, now we also multiply the time with this expression. हम लोगों ने ब्रैकेट हटाया तो हम लोगों को क्या मिला, 2u into t, 2ut plus a into t, we get t square. Now we get the equation. अब हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे हम लोगों ने डिवाइड किया. ओके, 2ut बाई 2 प्लस at स्क्वायर बाई 2. अब ये 2 and 2, it is cancelled out. So we get the equation s equal to ut plus half at square. Here s is the distance traveled by the body, u is the initial velocity and a is the acceleration of that body. If you wish you can note it down. ये कुछ steps जो हम लोगों ने यहाँ पे मिस किया है और आप नहीं समझ पा रहे हैं, then please note it down. Now we will derive the third equation of motion. According to expression, the third equation is v square is equal to u square plus 2as. ठीक है, थर्ड इक्वेशन हमारा ये है, v square is equal to u square plus 2as. और इसमें हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, we have to derive this expression with the help of mathematical process. Okay. It gives the velocity acquired. इससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि अगर कोई बॉडी s डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है, then what is the velocity of that particular object while traveling the distance s. s डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, we will find in this equation. Okay. From the second equation of motion, we get s equal to ut plus half at square. सेकेंड इक्वेशन अभी हम लोगों ने डिराइव किया और उसमें हमें क्या एक्सप्रेशन मिला था, s is equal to ut plus half at square. And also we consider the first equation. थोड़ी देर पहले हम लोगों ने उसे भी डिराइव किया था. From the first equation of motion, we have v is equal to ut plus u plus at. Sorry, v is equal to u plus at. Now from this equation, we can write at is equal to v minus u. at is equal to v minus u. ये u यहाँ पे इस साइड चला गया, इक्वल टू के इस साइड जाने से साइन जो है वो चेंज हो जाता है. ओके, नाउ t इक्वल टू v minus u by a. दिस a comes here. ठीक है, ये हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिया. Now we put the value of t. We put the value of t in equation 1. Equation 1 means second equation of motion. ठीक है, second of equation of motion में हम लोगों ने इस t की वैल्यू को पुट किया. ठीक है, ut plus half at square where there is t. यहाँ पे जहां भी t है वहां पे हम लोगों ने v minus u by a रखा. ठीक है, now what we get is, now अब हम क्या देखेंगे, पहले हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं. हम लोगों को क्या मिला था, s इक्वल टू
u into v minus u डिवाइडेड बाय a, पिछले एक्सप्रेशन में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, प्लस 1/2 a into v minus u by a, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को जो पहले मिला था, अब यहाँ पे हम लोग इस एक्सप्रेशन से यहाँ पे हम लोग समझेंगे, यहाँ पे क्या है, u into v, so here we write here u into v, u into u, यहाँ पे हम लोग को मिला u स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग को मिला u स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, 1/2, ओके, यहाँ पे 1/2 है, तो हम लोगों ने 2a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है इसका, तो हम लोगों ने यहाँ 2a स्क्वायर रख लिया। फिर उसके बाद हम लोग a को मल्टीप्लाई कर दिए बाय v माइनस u होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, v माइनस u होल स्क्वायर। v माइनस u होल स्क्वायर को हम लोगों ने इस तरह से ब्रेक किया बाय द यूजिंग फॉर्मूला a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हम लोग का था। तो ये इक्वेशन हम लोग ने v माइनस यू को इस फॉर्मूला पे ब्रेक किया। ओके, नाउ वी सॉल्व द इक्वेशन। इसे सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक द एलसीएम ऑफ a एंड 2a। यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे a और 2a का, देन वी विल गेट 2a एंड वी विल मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन बाय 2, बिकॉज हियर इट इज a, यहाँ a है और यहाँ 2a है, तो इस 2 को यहाँ पे हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, सो वी गेट 2u v माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2uv, यहाँ पे हम लोगों को मिल गया, एंड प्लस 2uv एंड माइनस 2uv, ये दोनों जो है वो कैंसल्ड आउट हो गया। माइनस 2u स्क्वायर प्लस 2u, सॉरी, माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, ये दोनों आपस में माइनस सॉल्व करके हम लोगों ने क्या क्या पाया, यहाँ पे पाया माइनस u स्क्वायर। सो वी गेट 2as, ठीक है, ये 2a जो है इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो गया, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन, बाय पुटिंग दिस u this side, we get v square is equal to u square plus 2as. So we find the third equation of motion. Now here we see v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, and d is the distance traveled by the body. This is the expression which is known as third equation of motion. You can note it down, pause करके इसे note करेंगे. Now here we have some points, few points which we must consider before solving any numerical. Okay, if a body starts from rest, its initial velocity is 0. ठीक है, अगर कोई बॉडी जो है वो रेस्ट पे है और वो स्टार्ट कर रही है मूव करना, then its initial velocity will be 0. If a body comes to rest, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और वो रेस्ट पे आई, ठीक है, then its final velocity will be 0. If a body moves with uniform velocity, then its acceleration will be 0. पिछले वीडियोस में भी हम लोगों ने इसे डिस्कस किया था, but we will note it down specially so that we can remember it while solving numericals. Okay. Now let us derive the equations of motion by graphical method. We already know that the first equation of motion is v equal to u plus at. So before its derivation, let us understand what the graph is saying. Here we have considered a body which is traveling from point A to B. यहाँ हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट या बॉडी को रखा है जो पॉइंट A से B की तरफ ट्रैवल कर रहा है, and its initial velocity is u, final velocity is v, and the time taken while traveling from A to B is t. ठीक है? Let us suppose a body moves in a straight line at a uniform acceleration, and its acceleration is uniform. The body is traveling from point A to B. The point A and B on the graph corresponds to the time 0 to t. So here the time
while traveling from A to B is 0 to T. ठीक है, 0 पहले यहाँ पे जब पॉइंट ए पे था तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो थी और बॉडी की जो वेलोसिटी थी दैट वाज 0. द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0, जब टाइम 0 थी, ठीक है, t जब 0 थी तो उसकी वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी वाज u and the final velocity is v at time t. ठीक है, the slope of the velocity time graph, ठीक है, अगर हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है इस बारे में तो हम लोग देखे थे कि वेलोसिटी बाय टाइम जब हम लोगों ने ग्राफ में ड्रॉ किया था देन इट्स स्लोप गिव्स द एक्सेलरेशन. स्लोप क्या क्या स्लोप से हम लोगों को पता चलता है? द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. So slope is equal to BC by AC. To find out the value, we find the slope, and the slope is equal to BC by AC. So slope means acceleration. Slope का मतलब होता है acceleration. So acceleration is equal to BC by AC. Now BC, we can write BC as BE minus CE. अगर हम लोग B में से CE को माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, देन वी विल फाइंड दिस वैल्यू. ठीक है, ये हम लोगों को मिल जाएगा. ओके, एंड इट इज डिवाइडेड बाय टाइम t. इट इज डिवाइडेड बाय OE. OE मीन्स t. ओके, नाउ we can write BE. BE means this one, this whole distance as OD because it is equal. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने पाया कि CE is equal to OA. CE is equal to OA and it is divided by OE. Okay, now OD is equal to V. OD is equal to V. यहां से हम लोगों ने डिस्टेंस देखा, यहाँ पे 1 मिनट इसे क्लियर कर लेते हैं. ओके, नाउ वी सी दैट OD is equal to V and OA is equal to U. ठीक है, यहाँ पे V है और OA जो है वो U के इक्वल है. So and also we see that OA is equal to T. So we get A equal to V minus U by T. Now on multiplying or cross multiplying T by A, we get AT is equal to V minus U. So we get the expression V equal to U plus AT. We get the expression V equal to U plus AT. This is the first equation of motion. This is the first equation of motion. Now we will derive the second equation of motion, that is S equal to UT plus half AT square. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारा? S is equal to UT plus half AT square. It is also known as displacement time equation. It is also known as displacement time equation. So to find out the displacement of the body, we find out the area under the velocity type graph. ये जो एरिया है हमारा velocity time graph के अंदर में, we will find this area. Okay, we will find this area, this one. Okay, so S equal to area of O A B E and again A O. ठीक है, ये पूरे एरिया को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, दिस एरिया. ओके, सो वी विल फाइंड आउट इफ वी एड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACE. ये वाले रेक्टेंगल की एरिया को अगर हम लोग इस ट्रायंगल के एरिया से ऐड करें देन वी विल फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट डन बाय द बॉडी. सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी OA into OE. Okay, length into breadth. Also we will add the area of triangle here. Okay, area of triangle is 1/2 into base into height, so we get
1/2 into AC, that is base, into BC, that is height, okay, altitude. So we get OA into OE plus 1/2 AC. For AC we can write, AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, OE लिख सकते हैं, okay. For AC we can write here OE. Or here one step is added, you have to remember this step, that we multiply and divide AC here. BC से हम लोगों ने AC को multiply और divide किया, okay. This is the step you have to remember, ठीक है. ये हम लोग ऐड करते हैं एक स्टेप जो हम लोगों को डेरिवेशन में हेल्प करता है. नेक्स्ट, OA into OE is equal to 1/2 OE. अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या चेंज देखा, वी कैन राइट AC एज OE, AC को हम लोग OE लिख सकते हैं, ओके. नाउ वी गेट S equal to OA into OE plus 1/2 BC by AC, BC by AC, here we have written BC by AC into this OE multiplied by this OE, we get OE square, ठीक है, we get OE square. Now we substitute all the values here, such as OA is equal to U, OA के जगह पे हम लोग वैल्यू क्या पुट करेंगे, U. OE is equal to T and BC by AC is the slope, that is A. So we get the equation, that is second equation of motion, S equal to U plus 1/2 A T square, ठीक है. S equal to UT plus half AT square, we get the second equation of motion. Here we have the third equation of motion, that is V square is equal to U square plus 2AS. It is also known as displacement, velocity displacement equation. So we have to find the area to find out the displacement, ठीक है. Area under the slope, we have to find the area under the slope for finding the displacement done by the body. So here we have a trapezium OABE, a trapezium OABE. To find the area of trapezium, we have the formula 1/2 into sum of parallel side into distance between them, ठीक है. ये फॉर्मूला हम लोगों को पहले से पता है, that is 1/2 into sum of parallel side into distance between them. To find the area of trapezium OABE, we can write it as 1/2 into A plus EB, ठीक है. OA, that is the first parallel side, and BE, that is the second parallel side, and the distance between them is AC. So we will multiply it by the distance between them. Again we have S is equal to 1/2 into OA plus OD. Why it is OD? BE is equal to OD, okay. BE is equal to OD. ये distance जो है वो इस distance के equal होगा. Now again we add a step here, is that we will divide and multiply AC by BC, ठीक है. BC से multiply और divide किया हम लोगों ने. Next is again we write S equal to 1/2 into OA plus OD, but here we have to do is we divide AC by BC, ठीक है. BC को हम लोगों ने AC से divide किया, and for BC के लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे BE, this whole distance, minus CE, लिख सकते हैं इसको BE minus CE. So the next step is S is equal to 1/2 into OA plus OD. Now BE can be written as OD. BE is equal to OD. Previously we have seen this, okay. And CE can be written as OA. CE को हम लोग OA लिख सकते हैं. Now we get that we multiply this OA plus OD into OD minus OA. A plus B and A minus B. We get A square minus B square. हम लोगों के पास ये फॉर्मूला है ना, A square minus B square is equal to A plus B into A minus B. ये फॉर्मूला हम लोगों को मैथ्स में भी देखने को मिलता है. सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला A plus B
into a minus b, we can write here a square minus b square. Okay, now substituting these values, OD is equal to, okay, let me clear it first. So the OD is equal to OD, it is V, and OA is equal to U, and we saw in the first equation that BC by AC is acceleration. So we can write it as, so we can write it as 2AS. So this 2 and this A will be multiplied this side. Okay, 2AS is equal to V square minus U square, or we can write V square is equal to U square plus 2AS. This is the third equation of motion. Now we consider, now let us see different graphical representation of motion. The very first is distance time graph. The slope of the distance time graph represents the speed of the body. Slope means this one, OA is the slope, and it represents the speed of the body. And in the case of uniform speed, what happens, it is a straight line in a graph. अगर हम लोगों का जो body है equal distance cover कर रहा है in equal time interval, then the distance time graph will give a straight line, and that straight line will represent the speed of the body. So the next graph is non-uniform speed. For non-uniform speed, we get, so in the case of non-uniform speed, we gave a curved line. ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ग्राफ पे हम लोगों को कर्व लाइन मिलेगा इफ अ बॉडी इज कवरिंग नॉन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन अच्छी तरह से याद है हमें कि बॉडी कवर्स नॉन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अब स्पीड और वेलोसिटी आर द सेम थिंग, पहले हम लोगों ने बताया, प्रीवियस वीडियो यू कैन सी इन द लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Also, you can click on the I button for the previous videos. If distance is replaced by displacement here, यहाँ पे हम लोग अगर distance को displacement से replace कर दें, then we draw a displacement time graph, and displacement time graph represents the velocity of the body. Okay, next one we have to discuss here is speed time graph or velocity time graph. ठीक है, speed and velocity are the same. If we write the displacement, then we get the speed, and if we write the displacement, we get the velocity. Now we will draw a speed time graph or velocity time graph. So the slope of a speed time graph represents the acceleration. Velocity by time is known as, the rate of change of velocity is known as acceleration. So here we will get the acceleration. So we have three cases here. When the speed remain constant, अगर speed जो है किसी object की constant है, then we will get the line like this. Okay, we will get a straight line, and which will be the parallel to x-axis. अगर हमारी जो speed है that is constant, and we draw speed on y-axis and time on x-axis, then we will get the straight line which will be parallel to the x-axis. ठीक है, which will be parallel to x-axis in the case of constant speed. In the case of constant speed, we will get a straight line which will be parallel to the x-axis. So next, uniform acceleration. In the case of uniform acceleration, its initial speed is 0, then we will get a straight line like this. In the case when the initial speed is not 0, पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था इनिशियल स्पीड वो 0, तो वो जो ग्राफ था वो इस तरह से स्टार्ट हो रहा था, मींस ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था. यहाँ पे जो है वो 0 से नहीं, यहाँ जो इनिशियल स्पीड है दैट इज नॉट 0, तो यहाँ पे जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो किसी दूसरे पॉइंट से, ओरिजिन से दूर जो होगा, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट बी लिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होगा, बिकॉज द initial speed is not 0.
इनिशियल स्पीड अगर 0 होगा तो हम लोग ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे. इफ द इनिशियल स्पीड इज नॉट 0, देन वी विल गेट द ग्राफ लाइक दिस. Non-uniform acceleration, yes, in the case of non-uniform acceleration we will get a curve line. जैसे बाकी हम लोगों ने देखा स्पीड, वेलोसिटी सब में हम लोगों ने जब नॉन यूनिफॉर्म है तो उसे हम लोग कर्व लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो यहाँ पे भी हम लोग जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कर्व लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे. For the case of uniform retardation, we will get the slope like this. यहाँ पे ऐसे जो होगा वो because it is retardation, so final velocity will be 0. So point B से ये point A पे आ रहा है. It means that time and speed will become 0. So our next topic is uniform circular motion. Uniform circular motion. Before we consider uniform circular motion, let us know what is circular motion. The motion of the body along a circular track. किसी भी बॉडी की जो मोशन होती है किसी सर्कुलर ट्रैक पे होती है तब उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन. फॉर एग्जांपल रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ मून ऑन इट्स ऑर्बिट, और अ पर्सन रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक. इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. Now let us know what is uniform circular motion. When a body moves in a circular path with uniform speed. ठीक है, बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव करे और उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म हो. ठीक है, then the body is said to be in uniform circular motion. So the formula to calculate the speed of the body in uniform circular motion is v is equal to 2 pi r divided by t. What is 2 pi r? It is the circumference of the path because the body is moving in a circular track. ये track पे move कर रही है, अंदर तो move नहीं कर रही है. So to find out the distance here, suppose अगर ये किसी point A पे है और वापस आकर के इसी point पे आ गई, it means it travels the circumference of the circle. वो circumference को travel करेगी and circumference of circle is equal to 2 pi r and divided by time t. ऐसे भी हम लोगों को ने देखा कि अगर हम लोगों को स्पीड निकालनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की तो वी हैव टू डिवाइड डिस्टेंस बाय टाइम. ठीक है, डिस्टेंस बाय v इज इक्वल टू d by t और velocity or speed is equal to distance or displacement by time. So to find out the distance we find the circumference of the circle here. So circumference of circle is 2 pi r and we divide 2 pi r by the time taken by the body. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने स्पीड फाइंड आउट कर लिया बाय अ बॉडी while moving in a uniform circular motion. Here v is the speed of the object, pi we know that 22/7. यहाँ हम लोगों को pi की वैल्यू ऑलरेडी पता है. r is the radius of the circular path and t is the time taken by the person while traveling on that circular path. So let us see the examples of uniform circular motion. The artificial satellites moves in uniform circular motion around the earth. जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमारे साइंटिस्ट जो है भेजते हैं या फिर वेदर के लिए, वेदर ब्रॉडकास्टिंग के लिए या नेविगेशंस के लिए, तो वो जो है मूव करता है दैट मूव्स ऑन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. द मून मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ. इसकी स्पीड जो होती है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज constant, speed constant. It means it is moving on a uniform circular motion. Next is, let us see one numerical. So the question is, a cyclist goes around a circular track once every 2 minutes if the radius of the circular track is 105 meters. Calculate its speed. For this, let us draw one circular track here. So सर्कुलर ट्रैक है और साइक्लिस्ट जो है वो एवरी 2 मिनट पे एक बार उसका चक्कर लगा रहा है. ओके, एंड इट्स रेडियस इज 105 मीटर. इट्स रेडियस इज 105 meters. We have to find the speed of that cyclist. Okay, we have the formula
V is equal to 2 pi r by t. So radius of the circular track is 105 meters and the time taken is 2 minutes. We will convert it into second. 2 into 60 is equal to 120 seconds. Now we will find out the speed of that cyclist, that is V is equal to 2 pi r by t. So 2 into pi, pi means 22 by 7. We have written here 22 by 7 and r is radius, that is 105 and the time taken is 120. We will cut and we will solve it and we will get the answer 5.5 meter per second. The speed of the cyclist on the circular track is 5.5 meter per second. Okay, that's all for the video today. In next video, we will start the second chapter of NCERT, that is force and laws of motion. Thank you very much for watching.